Okay, so as promised, आज हम लोग will do some topics today. We'll try to cover a few topics. Again, the main goal for today's session is make sure कि आप लोगों को पता है कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं. And if you have any doubts, you can just ask me. मैं कुछ prerequisite या फिर pre-reading भेजूंगा, which can help you get a head start for the project, get the head start for the course. Again, वो prerequisite pre-reading जो भी है, that is specially for Python. और I don't expect कि आप वो कवर करो पूरी तरह से या फिर कंप्लीट करो पूरी तरह से, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दैट आल्सो इन द सेशंस. ठीक है, बट दिस विल आल्सो हेल्प यू गिव गेट अ मोर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. ओके, let me just make sure anyone who is not there on WhatsApp can join this particular link for WhatsApp, and I'll be sharing links, notifications there for some time. उसके बाद में हम लोग डिस्कॉर्ड पे मूव होंगे और डिस्कॉर्ड के ऊपर हम लोग जितने भी रिसोर्सेस है रिकॉर्डिंग से सब कुछ शेयर करेंगे. ठीक है, so I'll just move this on this side so that anyone who is wanting to join should join the WhatsApp. Okay. व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम के वगैरह ऑफ होते हैं एंड वी कैनॉट कनेक्ट इमीडिएटली. थिंक मेनी पीपल आर मोस्टली using WhatsApp these days. So let's just use that for communication right now until we officially start the course. And after that, we'll move everything, all the communication, all the notes, recordings, sharing the material, everything to the Discord, जहाँ पर चीजें organized way में हम लोग share कर पाएंगे. ठीक है? If you have any doubts whether this course is for you or not, you can ask me. Now is the right time to ask them. Ideally, I want most of you to be joining the course because given the current scenario, all the jobs are at risk. लोग बोलेंगे कि there are some roles which might not get replaced by AI. I have seen roles which many felt that can never get replaced are getting replaced right now in the market as we speak. Okay, so be it your data engineering jobs, be it your SAP jobs, be it your software engineering jobs, most of these jobs which felt very, very safe earlier have been impacted by recent AI. Okay, so जितने भी कंपनीज इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं कंपनीज के, वो मोस्टली एआई के तरफ ही आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज उनको रिटर्न्स दिख रहे हैं उसकी वजह से. ठीक है, सबसे पहले तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है एंड सेकंड थिंग इज दे कैन रिड्यूस द फोर्स वर्क फोर्स आल्सो बाय यूजिंग एआई. तो जितने भी काम में यू नीड मोर ऑफ अ मैनुअल वर्क और मोर ऑफ अ human intervention, that thing is going to get less and less as we move on and see more and more complex models around us. Okay? There's a joke that goes around कि AI, only thing that AI cannot take up right now is a plumbing job. Okay? It's still far for AI to do. Okay. Anyways, so आप लोगों को WhatsApp ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो ये WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो. I'll share all the notifications, all the recordings and everything can be shared there for initial few days, and after that we'll move to the Discord. Any questions, any doubts? Hello, sir. Yes. Sir, being a fresher after this course, what all roles can I target? So the immediately you can target for as an associate machine learning engineer, junior machine learning engineer, or some kind of an intern as a machine learning engineer. ML ops ये सब कुछ. ठीक है, हम लोग agents पढ़ने वाले हैं, हम लोग LangChain वगैरह पढ़ने वाले हैं. So everything that is most relevant right now and most required right now in the market, वो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so you can obviously apply for even more roles, but these should be the target role that you should be applying for. कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए टारगेट नहीं करना चाहेंगे हम लोग, बिकॉज as we speak those roles are also getting impacted by AI. Okay, so हम लोग उसी रोल्स के लिए अप्लाई करेंगे जो रोल्स लॉन्ग टर्म रहने वाले मार्केट में and which can give you better returns. Okay, so
target for machine learning engineers, junior machine learning engineers, internships in machine learning engineers, AI engineers वगैरह. Okay, make sense? हेलो। Yes. हाँ सर, अभी हम जो मतलब कोर्स में मतलब आप जो टीच करोगे वो मतलब CNN एएनएन एल्गोरिदम का उसका भी मतलब कवर कवर हो जाएगा Correct. उसका। We'll learn all the CNNs, we'll learn RNNs, we'll learn LSTMs, we'll learn agents. So हाँ everything, I'm going to share the things that we are going to learn. Okay, immediately हाँ since you asked उसका, that. हाँ उसका मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह मतलब मॉडल मॉडल को मतलब हम स्क्रैच ट्रेन कैसे. करना वगैरह। हाँ ट्रेन Yes, करना मॉडल को वगैरह वो मतलब correct. क्रैश I can से share a मतलब। few हाँ examples if you'd like. ठीक है, एक example क्योंकि आपने पूछा अभी, I'll just share an example with you all. वो कि मतलब मैं. स्क्रैच से होगा मतलब। यस यस, अल्टी वो काम कैसे करता है, उसके बाद में उसको यूज कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग उसका पढ़ेंगे. आई कोडिंग, कैन. हाँ लेकिन उसका यस कोडिंग मतलब यस. CNN का कोडिंग और उसका मतलब हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. या CNN आई कैन शेयर द रिकॉर्डिंग्स एंड आई कैन शो यू कि हम लोग करते हैं वो सब कुछ. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि वी डोंट अज्यूम एनी ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स और एनी ऑफ द एआई मॉडल्स टू बी अ ब्लैक बॉक्स. ऐसे अज्यूम बिल्कुल हम्म, नहीं करना है कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और वो काम करेगा. दैट इज नॉट हम्म। व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर. अभी अभी हमारा कैसा हुआ काम. सर मतलब मतलब उसकी मतलब थ्योरेटिकली पढ़ाई हुई है लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट मतलब मॉडल को ट्रेन करना वगैरह कुछ नहीं आता मतलब हुआ है। हाँ, that's what we are going to learn here. I can share you an example. So ये जो है, this is a time series and sequential models example. Okay, this was हाँ for यस यस। students. You see this sharing? This is for AIML batch. It's a private group जो सिर्फ और सिर्फ AIML के students के लिए है. And you can see here training वगैरह कैसे करते हैं. So we are training the models here. Okay. After that, we are predicting the next word using the models. Okay. हम्म। मतलब Models को. रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क होगा वैसे ही होगा। Exactly. Exactly. Okay. So this is example of how we compare two models with each other. This is text generation example. हम्म मॉडल ट्रेनिंग में एरर्स कैसे चेक किए जाते हैं, एरर हम्म कैसे कम हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें. ओके. उसके बाद में हम लोग फिर वो मॉडल को जब यूज करेंगे तब जनरेशंस कैसे आते हैं. ठीक है, विदाउट अ सीड, विद अ सीड. ठीक है. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू यूज द मॉडल, हाउ टू मेक मुझे मॉडल बेटर. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. सर मुझे एक डाउट था, एआई की कोडिंग हम पाइथन में करते हैं तो करेक्ट. मतलब C++ में क्यों नहीं होगी, मतलब C++ में करेंगे एआई की कोडिंग तो स्पीड भी बढ़ेगी और मतलब लो लेवल लैंग्वेज है ना C++। Makes sense. And more, and there are many companies who do the coding in C++ too. तो हम्म, C++ में वो काम किया जाता है जो ऑप्टिमाइज्ड मैनर में करना है. ठीक है. हाँ अभी. मतलब सर गूगल वाले तो मोस्टली C++ ही यूज करते हैं ना, गूगल हाँ, और, they use. और सब So ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का। correct, and that makes sense too because uh, सबसे पहले तो C++ इज लेटेंसी बहुत कम होती है आपकी C++ हम्म में जब आप कोड लिखते हो. ओके. हाँ सेकेंड थिंग, जो C++ में चीजें लिखी जाती है, दोज आर वेरी लो लेवल. ठीक है. The reason that you pick Python is because सबसे पहले तो Python is written on C++. Okay, उसके बैकएंड में C++ ही कॉल होता है. बैकएंड में C++ ही वर्क होता है। करेक्ट. लैब। उसके बाद में Python के बहुत सारे लाइब्रेरीज जो है वो ऑप्टिमाइज करके रखे हैं उन्होंने सो दैट दे कैन वर्क एज गुड एज C और C++. ओके, सो देयर इसमें इज एन मतलब एआई, ऑप्टिमाइजेशन. हाँ एआई मतलब हमारा मॉडल जब वर्क करेगा पाइथन पे मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो C++ में वर्क करेगा तो फास्ट करेगा ना। या यू कैन ट्रेन द मॉडल. सो द थिंग इज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम लोग C++ में करेंगे तो you will lose a lot of time learning that language itself. उसका learning curve बहुत high है C++ का. Okay, हाँ and that मतलब is हाँ वो तो many people learning C++ and they are focusing on Python क्योंकि उसका learning जो है वो बहुत fast हो जाता है. As in you learn the language sooner and you can implement it sooner. ठीक है. Going from 0 to 100 in C++ is taking is going to take a lot of time versus going from 0 to 100 in Python is going to take even I would say 1/10 of the time that C++ would take. ठीक है. So learning curve बहुत कम है and Python is used in many places. C++ is very specialized language. It is only used
when you want to optimize stuff, ठीक है, अगर कोई हम्म, क्वांट का कंपनी है, अगर कोई कोड ऐसा है जिसको आपको फास्ट करना ही है, only then you would mainly focus on C++. Okay, most of OS the companies do that. Yes. So for example, अगर आप कोई फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं, कॉन्ट ट्रेडिंग में वगैरह, आपको पता है कि यहाँ पर लेटेंसी थोड़ी भी अगर बढ़ जाती है तो इट कैन अफेक्ट यू इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? आपका पैसा लॉस होता है, यू इफ यू नॉट ट्रेडिंग ऑन टाइम एंड सो ऑन. In those cases, latency is very important. Execution speed is very important. Okay, in those cases, C++ is used. All right, but if you have a model which can be trained offline and you're okay with little bit of latency, थोड़ा सा time अगर बढ़ भी जाए तो you're okay with that, then you can just simply use PyTorch to train the model. PyTorch is in fact written so efficiently that जब वो GPUs वगैरह ट्रेन करते हैं, it becomes very very fast. So optimization सारे अपनी जगह पे है for Python. All the libraries are well optimized to be able to run on your GPUs and your CPU both. Okay, एक्चुअली that's सर the way. हम Mhm. हमने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट किया था, मतलब लंग्स कैंसर डिटेक्शन यूजिंग AIML, तो हमने CNN वगैरह यूज किए थे। तब हमने ट्राई किया था मतलब C++ यूज करने की, लेकिन उसमें इनबिल्ट मतलब लाइब्रेरीज कम है ना मैथमेटिकली, मैटलैब वगैरह में लाइब्रेरी ज्यादा है, तो हम यूज कर नहीं पाए। Correct, and that makes sense because C++ is specialized language. उसमें libraries है बहुत सारी, but उसमें बहुत सारी चीजें आपको from scratch खुद करनी पड़ेगी. हाँ, स्क्रैच तो स्क्रैच से करना पड़ता Yes, and Python can or PyTorch can help you there, क्योंकि as a model developer or as a ML developer, आपका main goal होना चाहिए how to build an effective model, not that how to code an effective model. इफेक्टिव मॉडल बिल्ड करने के लिए आपको कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है how does the model work. You have to understand that, not just है। theoretically but also when you change the parameters, आप पैरामीटर्स चेंज करने के पहले पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये चेंज करने से ये चेंज होगा. give me a second, give me a second, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस. Yeah guys, sorry, there was some background noise. So what I was saying is we are going to learn Python mainly because it is used in most of the companies. Okay, and it opens more job opportunities. C++ के opportunities थोड़े से limited होते हैं. Did that answer your question? Yes, no? Yes. All right, great, Rishikesh. So good to know that we have people who have some experience in programming. This can help others also in the batch so that उनको पता चलेगा कि programming का level आपको कहाँ तक लेके जाना है, because these people can really set a standard saying कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. That means we know what the standard is and then we can just make the bar up. Okay, all right. So I was just showing an example जहाँ पर हम लोगों ने एक LSTM मॉडल वगैरह ट्रेन किया है, RN मॉडल्स ट्रेन किए. We used it on various kind of data. This is a sequential model which can be used on so this can be used on various kind of data. So टाइम सीरीज के डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हैं हम लोग. So ये टाइम सीरीज का डेटा है जहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि वैल्यू कैसे चेंज होगी विद द टाइम. And the same kind of models can be used on text information या फिर text data. All right. So
दैट इज जस्ट अ स्नीक पीक इनटू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, थिंक वी कैन जस्ट गो ओवर देम क्विकली अगेन. ऑलराइट. सो जो पूरा कोर्स है हमारा, वी हैव सेपरेटेड दैट इनटू सेपरेट वेरियस मॉड्यूल्स. सबसे पहला मॉड्यूल है ऑफ मशीन लर्निंग एंड मैथ फाउंडेशंस. इसके लिए जो भी चीजें आपको लगने वाली है एज अ फाउंडेशनल चीजें, वो हम लोग कवर करेंगे. इसमें यू कैन अज्यूम दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम और क्वाइट अ बिट टाइम. फर्स्ट मॉड्यूल है इसके लिए. एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी बहुत लोगों के लिए. ओके. So we'll take good amount of time on this particular module, and this is a foundational block for all kind of engineers, machine learning engineer, फिर आपके ML of engineer, जितने भी है सबके लिए foundational चीजें यही वाले हैं. Okay? We'll go into great details in this. We'll learn about how to use Python for machine learning. Okay, we'll learn about all the core algorithms, regression, classification, decision trees, जो अभी traditional machine learning बोला जाता है. We'll learn about that. Okay, although that traditional machine learning, many of people will feel that these are not required in these days, but these are foundational things which are required, and many companies are still using them. Okay, still using random forest, still using decision trees and everything. Okay, we'll learn from scratch. Okay? हाथ से हम लोग बना पाएंगे मॉडल्स. We'll learn with the in those basics. ठीक है. फिर मॉडल्स जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं कि ये मॉडल अच्छा है बुरा है, हाउ डू इवेल्युएट दैट. फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड मोस्ट ऑफ द मॉडल्स दैट वी सी अराउंड अस, दोज बिकम बेटर बिकॉज ऑफ द बेटर फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है. मॉडल इटसेल्फ कैन गिव यू सम gains, but most of the gains can be captured by doing a better feature engineering. Feature engineering का मतलब होता है कि डेटा प्रिपरेशन. ऑलराइट, विल फोकस मोर ऑन दैट टू. इसके साथ में प्रोजेक्ट्स रहेंगे हमारे दो विद द फर्स्ट मॉड्यूल. सेकेंड इज गोइंग टू बी योर डीप लर्निंग मॉड्यूल. डीप लर्निंग मॉड्यूल में हम लोग पाइटॉर्च पढ़ने वाले हैं. ओके. पाइटॉर्च के जितने भी एसेंशियल है वो पढ़ेंगे हम लोग. पाइटॉर्च यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद में उसमें बैक प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, उसमें फॉरवर्ड पासेस कैसे करते हैं, सो दैट यू कैन ट्रेन द मॉडल, अपडेट द वेट्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं. ठीक है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर न्यूरल नेटवर्क्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हाउ टू डू रेगुलराइजेशन, हाउ टू डू नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो लोग चीजें, वो सारी चीजें पढ़ेंगे. दिस इज ऑल डीप लर्निंग पार्ट. CNN पढ़ेंगे. CNN में हम लोग कॉन्वोल्यूशंस पढ़ेंगे. विल लर्न हाउ टू डू ट्रांसफर लर्निंग. विल लर्न वन ऑफ द मोस्ट commonly used network, ResNet, and then we'll also do time series modeling, जिसमें हम लोग RNN, LSTM और gated recurrent units वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है. Finally, we'll learn about transformers and attentions. This is where your GPT models are mainly. This is what the most of the GPT models are mainly working on these days. ठीक है. Attention, transformers, in depth पढ़ेंगे हम लोग. समझेंगे एग्जैक्टली काम कैसे करते हो, नॉट जस्ट कि वो एपीआई कॉल कर दिया एंड देन भगवान भरोसे विल वर्क और नॉट वर्क. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एट ऑल इन दिस कोर्स. ओके. दिस कोर्स इज मेनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है चीजें, सो दैट इन द इंटरव्यूज अगर आपको पूछा जाए कि ये काम कैसे करता है, यू डोंट से कि मैंने तो बस एपीआई कॉल किया, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. एंड दैट्स द वर्स्ट आंसर दैट यू कैन गिव इन एन इंटरव्यू. ओके. इसके साथ में हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे दो, विच इज लर्निंग थ्रू ट्रांसफर लर्निंग, एंड देन सेकंड इज बर्ट मॉडल यूज करके हम एनएलपी प्रोजेक्ट करेंगे. इसके बाद में जो अभी मार्केट में सबसे हॉट है, विच इज हाउ टू डिप्लॉय एनी मशीन लर्निंग कोड इन प्रोडक्शन. उसके लिए जो भी डेटा पाइपलाइंस रखते हैं, उसके बाद में एमएल फ्लो थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे ट्रैक करते हैं, फिर आपके एक्सपीरियंस रिप्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, मॉडल्स को सर्व कैसे किए जाएंगे, CI/CD पाइपलाइंस, गिटहब एक्शंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग. फिर विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ योर इश्यूज इन द मॉडल. ठीक है. डेटा ड्रिफ्ट होता है, मॉनिटरिंग वगैरह कैसे करना है मॉडल को, विल लर्न अबाउट दैट टू. ओके. दिस इज व्हाट इज मोस्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन steps. Okay. This is going to help you apply for ML ops role, ML op engineers role. And then the cloud that we are going to use, either we are going to use AWS SageMaker, GCP Vertex वगैरह हम लोग यूज करेंगे, या फिर Azure. ठीक है. One of these will be picked. Most likely we are going to use GCP and AWS. Okay. I have used GCP recently, so GCP हम लोग यूज करेंगे most likely, और AWS थोड़ा सा हम लोग ब्रश अप कर लेंगे. But you have to learn any one of the cloud ML for sure. Cloud ML आपको अपने resume में डालना है. This helps you
get more and more opportunities and more jobs, क्योंकि no one is having a strong enough computer on their own कि वो सारे के सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह रन करता है. यू हैव टू डिप्लॉय एवरीथिंग ऑन क्लाउड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, उसके साथ में हमारे दो प्रोजेक्ट्स रहेंगे और विल लर्न दोस प्रोजेक्ट्स टू. दिस इज एडवांस एआई. एडवांस एआई में हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे इन डिटेल. ओके, फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन सिस्टम्स में एएनएन वगैरह कैसे किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सर्च करना है कि मुझे क्या रिकमेंड करना है इस पर्टिकुलर यूजर को, तो उसके पीछे के जो अल्गोरिथम्स हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम यूजिंग FAISS एंड ऑल ऑफ दीज विल बी लर्न. ठीक है, फिर उसके बाद में जो अभी मार्केट में है विच इज रैग्स, देन विच इज लैंग चेन्स, वेक्टर डेटाबेसेस वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज पार्ट ऑफ एडवांस एआई मॉडल. जीपीयू की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, हाउ टू मेक एनीथिंग स्केलेबल, लेटेंसी कैसे कम करनी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग सी में क्यों नहीं करते वो चीज. ओके, सेम थिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू पैरामीटर्स दैट वी गिव फ्रॉम पाइटॉर्च टू, और ये पाइथन थ्रू भी हम कर सकते हैं सेम चीजें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स दैट यू सेट. ओके, तो वी लर्न दैट सम ऑफ द स्ट्रेटजीज. इसके साथ में आपके दो प्रोजेक्ट्स होंगे. And finally, this is a parallel module that works, that we go throughout the course, जिसमें हम लोग AI ML इंजीनियर्स के जितने भी रोल्स है इंडिया में कैसे क्रैक करने हैं, एंड हाउ डू यू अप्लाई फॉर देम, रेज्यूमे बिल्ड कैसे करना है, मॉक इंटरव्यूज, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इसमें. दिस इज अ पैरेलल मॉड्यूल दैट गोज ऑन थ्रू आउट द कोर्स. या क्वेश्चन, गो अहेड. हेलो सर. यस. हाँ सर, मतलब मेरा क्या है, मतलब मैं 2023 में पास आउट हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस से. तब से मैं मतलब जूनियर इंजीनियर, मतलब जेई होते हैं रेलवे में, आईटी, मतलब इंटेलिजेंट ब्यूरो वगैरह में, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था. तब से मतलब उस वजह से मेरा गैप हो गया, मतलब 2.5 years का. तो मतलब इंटरव्यू फेस करेंगे तो हमें मतलब एज ए एक्सपीरियंस हम फेस करेंगे कि एज ए फ्रेशर? We'll take that offline. Okay, because the session is being recorded, right? First of all, so I think we can talk about that. And yeah, definitely the course के बाद में, I can tell you this, course के बाद में your expertise or your level of understanding of ML and AI is going to be of at least 2 to 3 years experience वाले engineers. Okay? You can basically uh, give them a tough competition in terms of interviews. Okay, I can tell you that. यस. Yeah. मोर क्वेश्चंस एनीवन? सो ये सारे मॉड्यूल्स, इसका इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डिस्कॉर्ड पे डाल के रखा है. इफ यू गो ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसका लिंक मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, you will be able to see everything. Everything is planned in such a way that we'll be able to complete it in 5 months. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चीजें आपको इंटरव्यूज के लिए लगने वाली है वो हम लोग, I'll make sure that you are doing that within 5 months, so that even if some topics we can do parallelly while you're preparing for the interviews. Okay, जितना भी कोर्स मटेरियल है वो सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा इन द डिस्कॉर्ड वंस योर एडमिशन इज कंफर्म. ओके, ये सारे रिसोर्सेस हैं जो मैं ओपन करूंगा बाद में जब आपके एडमिशन वगैरह कंफर्म हो जाएंगे तब. ट्राई टू कंफर्म योर एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू गेट एन हेड स्टार्ट. रिकॉर्डिंग सब शेयर कर दूंगा मैं शुरुआत के. वी स्कू ओपन का पॉलिसी है दैट वी डू नॉट शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग्स. ओके, वी डू नॉट शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग्स. We prefer live sessions. If you want, you can talk to any of the school open office people. They'll tell you why exactly we don't do the recordings or we don't share the recordings. There's no promise of sharing any of the recordings, but from my side I can tell you this, that I'll be sharing all the important recordings that are required for you. Okay, I can tell you that. And minimum 20% से ज्यादा recordings मैं share करूंगा. ठीक है, minimum 20% recordings आपको share किए जाएंगे, उससे ज्यादा ही मैं share करने की कोशिश करूंगा. Okay, that's the promise that I can give from my side for the course that I am teaching. Okay, I'm not vouching for the other courses here. Okay, बाकी के course they'll have their own way of dealing with the recordings and all. Okay,
Since this is very new and this is complex, I can guarantee that I'll share at least 20% or more recordings. You can expect even more for sure. And if you miss anything, you just send me a message and I'll share the recording for the missed sessions. Only thing is, don't try to make it a habit कि आप sessions miss कर रहे हो और फिर recordings के भरोसे बैठे हो, because that will, first of all, that is very risky, क्योंकि आप पीछे रह जाओगे और कोर्स आगे चला जाएगा. ठीक है, so that is very risky कि आप कोर्स के साथ में नहीं चल रहे हो. And I'm going to assume that all of you are adults, so जो भी आपको होमवर्क, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे, आप विद इन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हो, barring if there is any really really big emergency. But do not get lazy just because you didn't get time or just because you got frustrated. Give up नहीं करना है. Anytime you need any kind of a mentorship advice or thinking कि ये काम नहीं कर रहा है, this is very complex, I'm trying to give up or something, you can talk to me. The goal really is कि you should be job ready and you should get a job as soon as possible. Okay, and in this market right now, these are the only roles that are opening up. Okay, I think I've shared with you some of the reports also earlier. All the industries are seeing a slowdown, but this industry is something which is seeing more and more jobs coming in. Okay, so let's take advantage of that while this tide is there. Okay, let's try to ride this tide. Question, go ahead. सर मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम मतलब फ्रीलांसिंग करने के लिए भी रेडी होंगे मतलब. Yes, yes. If you do this course properly, all the projects properly, then you can definitely do freelancing. You can definitely work on the projects on yourself. And many of the students have done that too. I'm not saying that's not something that is not doable. Yes. Yes. You'll have all the tools that you require to be able to do that. Okay, जो भी tools, and think of it like आप कोई भी चीज बिना समझे नहीं कर रहे हो. ओके, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मेनी एआई इंजीनियर्स, मेनी एमएल इंजीनियर्स. अगर उनको आप बहुत बेसिक चीजें पूछना शुरू कर दो, they'll struggle a lot. Okay, and that's a red signal कि वो इंजीनियर कुछ चीजें करने वाला है जो आगे जाके ब्रेक होंगी और उसको फिक्स करते नहीं आएगी, बिकॉज ही डजंट रियली नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. ठीक है, इट इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट कॉलिंग एन एपीआई एंड देन लेटिंग इट वर्क और लेटिंग इट डू इट्स ओन जॉब. That is not how things work. That is not how companies expect a machine learning engineer or an AI engineer to think of things. ठीक है, आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, आप बोलोगे कि मैंने ये एपीआई कॉल किया और फिर वो एक्सपेक्टेशन है कि वो एपीआई अपना काम करेगा, then trust me, that is not an AI engineering job. That is not an ML engineering job. वो completely replaceable job है जो कल कभी भी चला जा सकता है. There's no moat in that job. Okay, so वही चीजें करेंगे हम लोग जो समझ के इन डेप्थ हम लोग यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अगर आपने एपीआई कॉल कर दिया, वो काम कर रहा है, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. बट दैट इज अ फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग कि चल रहा है, बट why is it working? You can never answer that, right? And if you cannot answer that, then you don't know how to make it work if it is not working in certain conditions. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक चैटबॉट लिख दिया, वो चैटबॉट आपको आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी यूजर्स आते हैं उनको आंसर्स देता है, लेकिन कल को अगर वो चैटबॉट ने कुछ hallucinations करना शुरू कर दिया, या फिर it started giving you answers which are completely nonsensical, then the chat job, it is a complete failure. उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि fix this, you should know what are parameters that you need to change to be able to fix that, right? So things like that are very very important. उसके लिए हमें we have to understand basics and we have to know how to actually code them also. Alright, ये सारे टॉपिक्स है हम लोग जो कवर करने वाले हैं. इसमें अगर कोई भी डाउट होगा किसी को, जस्ट मेक श्योर यू कैन गेट इन टच विद मी इधर थ्रू व्हाट्सएप और ऑन टेलीग्राम. आई एम नॉट श्योर हाउ टू गेट इन टच बाय टेलीग्राम, बट व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो. दिस इज द लिंक अगेन, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपने टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आप चेक करते हो, देन इट इज फाइन. आई विल शेयर द इनिशियल रिकॉर्डिंग, इनिशियल थिंग्स ऑन टेलीग्राम. व्हाट्सएप इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सो दैट अगर आपको इमीडिएटली कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन गेट इन टच विद मी. दैट्स व्हाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि व्हाट्सएप ज्वाइन ही करना पड़ेगा आपको. कोर्स अगर ज्वाइन करना है नहीं है तो, इफ यू आर स्टिल डिसाइडिंग, देन इट्स अप टू यू.
but this is the way I can definitely connect with you all faster. Okay, questions, anyone? All right, everyone okay with this? Can I move on? Yes, no? Speak up, guys. Yes. All right, thank you. uh all right, so as promised, I was going to share prerequisite or something that can give you a head start. Okay? So what is wrong with this? So this is the thing that is going to give you a head start, which is called as Helsinki Python MOOC. So Helsinki is a university in Helsinki, and it has a very extensive practice exercises, in fact, hundreds of them. You can get started with that as a pre-course work. Again, this is not something which is absolutely necessary if you already have a little bit of background in Python, a little bit of background in programming. This is especially important for people who want to get start और कोर्स में आगे जाके अगर आपको जल्दी जल्दी चीजें सीखनी है, and since you all are still early, you will have some more time to work on this. ठीक है, we are going to learn everything that they are teaching here, so not necessary कि आप इसी से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग कवर भी करने वाले हैं. What's wrong? When once you, I'll share that link on WhatsApp, okay, or I can just share it right now also here. यहाँ पर मैं लिंक शेयर करके रखता हूँ. Okay, so once you, it might ask you to log in या फिर sign up वगैरह करना पड़ेगा आपको. You can do that sign up and everything. This course, what is wrong? ये कैसे कोई बटन लगता है? It's not allowing me to click anything right now. Every time I click something, it is making me. यहाँ कोई बटन लगता है. Okay, something is wrong here. Uh, Anyways, so the point is you can go on this particular link and sign up, and आपको ये पहले 7 पार्ट्स करने हैं अभी, जब आपको टाइम मिलेगा तब, and it is going to help you. Crap, not allowing me to click anything right now. So ये पहले 7 पार्ट्स करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, and if you're not able to access it or if you're not able to get to it, just let me know. ये लिंक है जो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, and you don't have to do any of the exercises as of now. यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जब आप साइन अप करोगे तब आपको एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर आप कोड वगैरह लिख करके सबमिट कर सकते हो, सो दैट यू कैन सी व्हाट यू आर राइटिंग और सी व्हाट द आउटपुट इज. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स. जितना जल्दी आप कवर कर लोगे उतना जल्दी आप एडवांस टॉपिक्स पे मूव ऑन कर पाओगे. ठीक है, तो ये पहले 7 जो है, यू कैन अज्यूम दिस एज सम काइंड ऑफ अ कोर्स वर्क, जो मैं कोर्स में भी कंप्लीट करूंगा. आई विल एक्सप्लेन टू पीपल हु, बिकॉज सम पीपल जॉइन लेट टू एंड सम पीपल डू नॉट गेट टाइम टू कवर दिस. बट इफ यू हैव टाइम राइट नाउ, over the weekend, over next few days, you're more than welcome to go through these. ये पहले 7 करने, and then if you have time you can do others also, but I would expect कि ये पहले 7 try to cover them. Okay, and if you have any doubts you can definitely ask me, and we'll try to clear them out. लिंक मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा. This is the link that we are trying to do. Yeah, go ahead. Question. हम लोग अभी जो अभी एआईएमएल कोर्स में जितने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो मुझे डाउट, मतलब मुझे एक क्वेश्चन है कि आपको ऐसा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर यूज करने वाला है, ये फ्रंट एंड में यूज होने वाला है या बैक एंड में यूज होने वाला है?
Sure, I can. I was gonna share this project to you all. So actually, this was the demo that I was going to share. Somehow not working right now. So what this basically project is, I can tell you overview, and then I'll make sure कि ये work करेगा next time. There's some issue. Okay. So what this basically project is, so this is some kind of an AI director or a studio, और ये front end वगैरह भी हम लोग पढ़ लेंगे. It is very simple to write it in Streamlit वगैरह. We'll learn all of that. What it does is it takes a raw video. Okay. उस वीडियो का यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखेगा. I just play this. Okay, so this is some kind of a video that we have. It's kind of a podcast or an interview, or we are going to give instructions to the AI. Okay, so AI का काम ये रहेगा that this is a video and the guests are going to speak about some stuff, and I can give you a prompt here. Okay, ये prompt वगैरह somehow this is not working today. Okay, ये prompt, you are going to say send some prompt here, and then you are going to say take an action. As soon as you do a take an action, it will create a short video which can basically take out important parts from this video or this interview, and you can post them as shorts, or you can post them on your Instagram, so that you can get more and more traction on the main video. So this is all built using LangChain, using RAGs, using models such as Whisper. Then we're also going to use some models which are going to understand what exactly this is. So this is an example of a end product that you will be able to build if you do this course properly. But again, this is still more like a black box to many people. अगर आप बैठ के करोगे, you will be feeling कि यार ये तो बना सकते हैं. This is nothing complex, okay? Because all you have to do is maybe call some models, call some APIs, and expect it to work. Okay, so this is an example of project that we will try to do. Now, the things which are interesting for that are basically how do you deploy that in cloud? Okay, how to make GCP the provider. All right, what happens when you push things? How to make the artifacts? How to build them? How to run the product in the on the cloud and everything. Okay, this is a cloud environment में कैसे काम करेगा वो. You will learn all of these steps in detail. उसके बाद में how to test the same thing on your development environment. Okay, developer environment में कैसे काम करेगा सेम चीज. ओके, कहाँ से अपलोड किए जाएंगे, कहाँ से बैकएंड में कौन सी सर्विस कॉल किए जाएंगे, कौन से मॉडल्स यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पर दो मॉडल्स के, यहाँ पर एक मॉडल का नाम लिखा है विच इज यू ओनली लुक वंस वर्जन 8. दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो एंड एवरीथिंग. तो उनको सेव कहाँ रखना है. ओके, इफ यू वांट टू डिप्लॉय दिस ऑन क्लाउड, then what kind of services would you require, what kind of databases would you require, how would you do that, कहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे, कहाँ पे अपलोड किए जाएंगी चीजें. एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू दिस. ठीक है, so this is kind of a overview of things that I expect you should be able to do after the course is done. In addition to this, I also expect कि आप some kind of a recommendation system भी लिख पाओ. For example, अगर मैं गूगल में जाता हूँ and I just, let's say I type this, okay, and I say enter, फिर रन करता हूँ मैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ recommendations आ रहे हैं आपको, right? You see these recommendations here on the right side. So these recommendations are based on the prompt that I have given. It had many options. It had billions of options to give, but वो billions of options में से उसने कुछ ही options आपको दिखाए. Why does it do that? How does it do that? How does it recommend this? ठीक है, ये चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. That is basically your this model, जो that is basically your recommendation system model. ठीक है, हाउ फिल्टरिंग कैसे किया जाता है, बिलियंस में से छोटे कम डेटा कैसे लेके आए जाते हैं. ओके, विल लर्न ऑल ऑफ दैट. हाउ टू डू सिस्टम डिजाइन, सो विल लर्न ऑल ऑफ दैट. ओके, सो दैट्स एन एग्जांपल. इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट्स में आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ. तो these are all the notebooks that I'll be sharing with you. There are around like hundreds of notebooks that I created. Where is that? जैसे कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है. दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ
डूइंग अ क्रेडिट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट रिस्क कितना है। Okay? यहाँ पर हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। ओके, दिस इज इनफैक्ट फर्स्ट मॉड्यूल के बाद में करने वाला प्रोजेक्ट है। ओके, जस्ट अ नोटबुक, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू डू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा को अंडरस्टैंड कैसे करना है, मिसिंग वैल्यूज वगैरह कैसे फिल आउट करनी है। फिर उसके बाद में मॉडल को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कौन सा मॉडल यूज करना है, उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। फिर मॉडल को ट्यून कैसे करना है सो दैट इट वर्क्स फॉर योर स्पेसिफिक वर्क फ्लो। फिर उसके बाद में मॉडल में से पता कैसे करना है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। कल को अगर आपको पूछा जाए कि ये डेटा है, आपने ये मॉडल ट्रेन किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, व्हाई इज दिस मॉडल टेलिंग अस दैट दिस इज द प्रेडिक्शन। ओके, इट इज टेलिंग अस दिस इज अ प्रेडिक्शन बिकॉज ये फीचर की वैल्यू ये है। ओके, यू शुड बी एबल टू लुक इनटू दैट ब्लैक बॉक्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वन मोर प्रोजेक्ट। One more example would be, not work today for me. ये पाइटॉर्च के एग्जांपल से कि हम लोग पाइटॉर्च से इसेंशियल्स कैसे पढ़ेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज आर लाइक हिडन प्राइवेट नोटबुक्स ओनली टू बी शेयर्ड विद कोर्स पीपल। This might be one more. Not this one actually. Let me just check. No, not this one. एक थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा नोटबुक दिखाया था आप लोगों को। Okay. Can't find it right now. Okay, we are going to learn those two. Okay, ठीक है, मॉडल मैं आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द नोटबुक्स राइट नाउ। उसके बाद में जो चीजें हम लोग और पढ़ने वाली है, विच इज हाउ टू डिप्लॉय स्टफ इन द प्रोडक्शन एंड ऑल। आई कैन जस्ट शेयर यू अ स्मॉल project that I've been working on. Would I stop working completely? Wait. Let me just make sure. In GitHub, I need to go to my GitHub. My keyboard is not working somehow. What's wrong? History में दिख जाएगा. Yeah, I'm not able to open my GitHub right now because code is not working at all. I think we should be able to check it here. Yeah, यहाँ से मिल जाएगा. Let me go to the first batch. Yeah. To try to type it again. What's wrong? Okay, anyways, I'll try to show it in tomorrow's session. मेरा कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा है. Something is wrong here. How do I open a keyboard? I might have to disconnect and connect back again. ठीक है, मैं कल के सेशन में दिखाता हूँ आपको. ठीक है, I'll open the GitHub for you. It's not working right now somehow. I think, yeah, Rishikesh. सर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसमें आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? Yeah, I can work. I can help you. मुझे स्केलेबल सर्वर का प्रोजेक्ट बनाना था। हाँ,
we can scale the servers. So that's what I was going to share actually. The project, how GitHub का project, if I can somehow find it. मुझे बाय यूजिंग C++ मुझे स्केलेबल सर्वर का प्रोजेक्ट बनवाना था, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तब तक सीपीयूज वगैरह ऐड करते जाएगा वो. Yeah, for that you need Kubernetes and all, right? So that is part of ML ops and that is part of DevOps. Okay, I can help you with that, but that is not going to be part of our course. Just for your information, because that is mainly into DevOps. Okay. I can help you. It's not a big deal. We can talk about it, but that is not part of the course, so that you understand कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Okay. Can someone send me a GitHub link here immediately? अगर किसी का GitHub होगा तो just send a link here on the message here. Any GitHub, just github.com भी अगर आप लिख के भेजोगे, https.github.com भी अगर लिख के भेजोगे तो भी it's fine. Or just write GitHub or send it to me. I can just show you one project that I'm working. Type something and just send it. Send GitHub here. मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है. ये भी काम नहीं कर रहा है. There you go. Yeah, so I was just gonna show this particular project. Okay, ये project was done especially for the demo, but I can show you what exactly we are going to learn. ठीक है, यहाँ पर actions में जब जाते हैं हम लोग, तब हमें पता चलता है कि how do we deploy stuff into the production, how do you do the security audit. So we are going to take examples of this just to learn कि MLOps वगैरह कैसे किया जाता है. ठीक है, मॉडल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय कैसे करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, फिर उसके बाद में आपके जो लिंक्स वगैरह होते हैं, डीएनएस वगैरह कैसे अपडेट किए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट थियोरेटिकली हम लोग पढ़ेंगे, बट हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये सब सारी चीजें, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योरसेल्फ. ओके, so this is an example of a project which is having a CI/CD in it, okay, which is having a continuous integration, continuous deployment. It also has some models in it. Okay. I wish there was a link to this. I could have shown that. Can someone one more time type here make video? Make video. यहाँ पर type करो make video and just send it once. Thank you. Sorry guys, my computer is today acting weird. सिर्फ make से काम होगा. This is the website. So जो अभी आपको मैंने ये दिखाया था code, that code is basically for this particular website. Okay? As you can see here, this is taking some kind of videos, uploads and everything, and then कुछ AI instructions दोगे आप, उस AI instructions के basis पे आपको AI generated video बना के मिलेगा. Obviously this is expensive to build, as in there are big companies who actually try to do the same thing, but they have deep pockets, so APIs वगैरह कॉल कर सकते हैं वो लोग. We are going to learn how to do all of this, so it's going to be exciting. लेकिन जो चीजें आपको भूलनी नहीं है वो है कि we will start with basics. Okay, we are not going to skip any of the basics. सारी चीजें हम लोग basics में पढ़ेंगे. In fact, पढ़ते वक्त आपको लगेगा why are we learning this? Why this feels very basics, but they are very important. इंटरव्यूज में अभी भी बेसिक चीजें पूछी जाती है, अभी भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स पूछे जाते हैं, फाउंडेशनल चीजें पूछी जाती है. Okay, questions anyone?
So this website is basically powered by this particular code. It's a private code right now. We'll try to build something similar for you all. All right. So right now, like I've already said, the AI/ML ka market is something which is booming right now. Okay, so make sure we take advantage of that thing and try to be in the job market as soon as possible. Okay. इसके पहले के सेशन में हमने पढ़ा था कि AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, and what are the subfields and everything. So you can assume or you can try to understand it from this particular hierarchical diagram. Okay, AI जो है, it is basically a generalized term for building systems which can showcase some kind of an intelligent behavior. All right. फिर AI में AI can be done through either machine learning या फिर कुछ रूल बेस्ड सिस्टम्स वगैरह जिसमें प्लानिंग वगैरह लिखे जाते हैं. ठीक है. मशीन लर्निंग में फिर आपके अलग अलग वर्जन आते हैं. देयर इज समथिंग विच इज डीप लर्निंग एंड देन देयर इज ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग. ठीक है. यहाँ पर जो NLP, कंप्यूटर विजन और स्पीच वगैरह लिखा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डीप लर्निंग. ओके, इसमें ये सारे एल्गोरिथम्स अलग अलग हैं. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ डीप लर्निंग मोस्टली. ओके, ये एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के. आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हो, आप कंप्यूटर विजन कर सकते हो, यू कैन डू द स्पीच रिकॉग्निशन. दीज आर ऑल एप्लीकेशंस एंड दीज आर बेसिकली द मॉडल्स या फिर द टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू अचीव दिस एप्लीकेशंस. ओके, उसमें भी हम लोग जनरेटिव मॉडल्स पढ़ेंगे, विजन मॉडल्स पढ़ेंगे. विल आल्सो लर्न अबाउट डीप लर्निंग एंड लिटिल बिट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है. Questions anyone? So do not get confused. बहुत बार AI ML बहुत साथ में यूज किए जाते हैं. That is because वो closely related है दोनों एक दूसरे से. Because of उनके applications mostly are around using this AI. All right. Questions anyone guys? We can meet up tomorrow session if you don't have any questions. जो लिंक है प्रोग्रामिंग का as a prerequisite I'll send out. Make sure कि आप वो शुरू करें and we'll try to have a session tomorrow. I'll send a notification. So the days that I'm trying to decide is we'll have sessions on Monday, Friday, and either Saturday or Sunday. ठीक है, मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा. मेक श्योर कि आप लोग ऑफिस के साथ में बात कर रहे हो फॉर योर एडमिशंस, कंफर्मेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम राइट नाउ. आई वांट यू टू ऑल अंडरस्टैंड कि डोंट गेट इनटू अ कोर्स दैट यू फील लेटर कि आपके लिए नहीं है. तो उसके लिए पहले ही आप समझ लो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, and get a clarity कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं. I would rather do that right now than later you guys have regret कि ये मेरे लिए नहीं था या फिर ऐसा कुछ. ठीक है. I'm pretty sure this is going to help all of you who join the course, but for that you need to be completely committed from your side. Okay, I'm committed from my side. I'll do everything that is required so that you all can succeed here with this particular course. Questions anyone? All right. So if you are not joined the WhatsApp, make sure you join the WhatsApp, and then we'll meet tomorrow. Tomorrow we'll try to cover a few topics. या फिर अगर आपके questions होंगे तो वो cover करेंगे. I have shown you some examples कि हम लोग क्या क्या course में पढ़ने वाले हैं. And hopefully that was motivating enough for you to basically decide who or what. Okay. Questions anyone? आप में से कितने लोगों को पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है with AI/ML? Can I get a hand raise? You can raise your hand by just doing this. कितने लोगों का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा? I mean, have you ever tried any kind of an AI? Have you ever tried any kind of an ML?
आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है और यूज एनी काइंड ऑफ एन एआई टिल नाउ? All right, great. So most of you, right? So you all know how powerful that feels. So AI itself is feels very magical when you use it first time, but understanding what is happening under the hood is what we try to focus on this particular course, so that you can become a developer of that, not just a user of that. Using that is one thing. Developing that is even more exciting. Okay, so we'll learn that. All right, thanks, guys. If you guys have any questions, you can ask them, or else I'll see you all tomorrow at 8:30 again, same time. हेलो। Yes, Rishikesh. हाँ सर, अभी आपके मतलब इंस्टीट्यूट पे मतलब डेवऑप्स के वगैरह कोर्सेस अवेलेबल नहीं है क्या तो फिर? So DevOps, you can talk with Ashish sir. I think he has some plans. But हम लोग MLOps पढ़ने वाले हैं in this particular course. So if ओके। you are interested in DevOps, particularly DevOps, then I think you might have to talk to us office about it. But if you ask me, instead of just doing DevOps, you should do MLOps, because that is what is required in the industry right now. आप DevOps करोगे, लेकिन कल परसों कभी तो जाके आपको ML पढ़ना ही पड़ेगा, because everyone wants to deploy machine learning models. They want to deploy systems and everything which are robust and everything, but they also want to have some kind of a machine learning models अभी also कैसे deployed. सर, मतलब Right? मतलब मैं पास आउट होने के बाद मतलब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। गेट Okay. एंड मतलब आईटी के वैकेंसीज होते हैं मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो और वगैरह रेलवे में। तो Mhm. मतलब मेरा गेट का सिलेबस हुआ है, गेट के हिसाब से सिलेबस हुआ है, इसलिए मतलब सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड है, सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटाबेसेस वगैरह नेटवर्किंग इसका। लेकिन पाइथन का इतना नहीं है, मतलब पाइथन नहीं है ना मतलब गेट में। Okay. Okay. I didn't know कि ये पे Python नहीं है, but yeah, I mean, you can take a call yourself if you सब्जेक्ट है decide. ना, मतलब एटोमेट मतलब एल्गोरिदम्स वगैरह डेटा स्ट्रक्चर एंड ऐसे We learn डेटाबेस DSA, right? So इस कोर्स में हम लोग DSA वगैरह भी कवर करेंगे, so that you can crack the interview. ओके। Yeah. क्योंकि पाइथन के इंटरव्यूज में आपको डीएसए वगैरह पूछा जाता है, सो विल कवर दैट. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं, सो बिकॉज आपका मेन गोल है कि इंटरव्यूज क्रैक करने, राइट? ओके, यस सर। भालचंद, डू यू हैव अ क्वेश्चन? या यस, तो हम एआई एजेंट्स वगैरह भी क्रिएट करने वाले हैं क्या? करेक्ट. सो दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स. ओके दैट इज पार्ट ऑफ द. सर, एंड पाइथन लाइक we need advanced concepts also, like the whole. तो पाइथन में जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, तो यूजुअली यू कैन स्टॉप एट how to use decorators, how to create decorators, how to do exception handling, how to create classes and all of that. आपको थोड़ा सा मल्टी थ्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाइथन में, ओके बिकॉज मेन फोकस रहेगा आपका मशीन लर्निंग एंड एआई. ओके, सो आई ओके एक्सपेक्ट कि it's going to be fairly limited in terms of that. ओके, बट थैंक यू। बट या जो रोल के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके लिए जितनी भी चीजें रहेंगी वो हम लोग कवर करेंगे. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग पूरा पाइथन पे फोकस करेंगे, देन दैट बिकम्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स, राइट? या ग्रेट, ओके, थैंक यू। यप, यू आर वेलकम. ऑलराइट.
So if you guys have any questions, feel free to ask me on the WhatsApp or next time when we meet. We'll meet tomorrow at 8:30. If you have your friends, colleagues who are interested to join, make them to join at least for the free sessions, because शुरुआत के कुछ sessions free है हमारे. And try to get in touch with office to have your admission confirmed as soon as possible so that you can get access to the resources early. Okay, chalo. I'll see you all tomorrow, and happy learning, everyone. I'll share the record. I'll share the link to the prerequisite for the course. Okay. WhatsApp join kar lo aap log. I'll keep this open for some time and then we'll disconnect. You all can disconnect if you are already there. What are you doing? Oh. All right, so that's my son on the background. But yeah, those people who want to leave the call, we're happy to disconnect, and feel free to disconnect, and we'll connect tomorrow at 8:30. Thank you, sir. Yep, you all are welcome. Thank you, sir. Bye. Bye. Hello. Yes. Yes, I want to ask one question. Yes. I have a predominant background, like 8 plus 8 experience in mobile application development. So